है डायरी राइटिंग की, वो डेली लिखती है कि आज मैंने ये किया, आज मेरे आज मेरा बहुत खराब था, उसने मुझे ये कही, ठीक है, एंड देन पता चलता है अगले दिन उसका मर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल समबडी इज राइटिंग दैट उसका मर्डर हो गया, तो ये जो उसने डायरी लिखी है इसमें बिकम एविडेंस, एंड देखो मैं डॉक्यूमेंटरी एविडेंस उसके पास वो था, पर वही काम अगर उसने टैब में किया होगा तो वो भी अब डॉक्यूमेंटरी एविडेंस की डेफिनेशन में आता है, दैट इज व्हाट डीएसए हैज डन, to make it little more wider and little more easier to incorporate what is a document. इतना समझ में आया? हमारी चोरियां भी हुई थी, ठीक है, तो अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 की थोड़ी सी डिक्टेशन और डूडी नहीं अभी डूडी खत्म नहीं हुआ, हम इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ने फिल करेंगे डिक्टेशन। इलस्ट्रेशन क्या होगा, क्या है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज आप लिख रहे हो इज अ डॉक्यूमेंट, अब वो जरूरी नहीं है कि वो पेपर पे कर रहे हो, इट कैन बी डन इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आल्सो, ठीक, अब मैंने नोट्स यहाँ यहाँ लिख दिए, राइटिंग करती दैट इज अ डॉक्यूमेंट, द इलस्ट्रेशन इज शोइंग, अब उसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए पेपर, वो इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल, बट डेफिनेशन क्या कह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, तो राइटिंग दैट मींस ऑन पेपर एंड ऑन फोन ऑन टैब ऑन एनीथिंग इज डॉक्यूमेंट, ठीक, इलस्ट्रेशन समझ में आया। सेकंड कह रहे हैं फोटोज प्रिंटेड लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, लिथोग्राफ क्या होता है, एनीवन, प्रिंटिंग टेक्निक होती है, न्यूज़पेपर वगैरह किसी चीज़ की प्रिंटिंग टेक्निक होगी, तो प्रिंटिंग मतलब परमानेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट जो चीज़ लिख दी, ठीक है, ये तभी होता है ना, लिखने के लिए उसमें पैसे दिए थे कि परमानेंट हो जाता है, और कोई बंदा जुबान कभी बदल जाए, लिखा हुआ नहीं बदल जाता, ऐसे बोलते थे ना पहले ज़माने में कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट है, आपने पेपर है क्या, तो क्या था वो परमानेंट हो गया, अब परमानेंट देखा जाए तो टैब में और इसमें परमानेंट तो यूं कुछ भी नहीं, आप चाहो पेपर फाड़ दो, आप चाहो उसको डिलीट कर दो, बट स्टिल द आइडिया इज टू ऐसी कोई चीज़ जिसकी इंटेंशन इज फॉर हमेशा के लिए रखने की, ठीक है, सो लिथोग्राफी उन्होंने करी, कोई भी प्रिंटिंग टेक्निक से कोई भी चीज़ बनी है वो भी डॉक्यूमेंट हो गई, ठीक है, देन वी आर सेइंग वर्ड्स प्रिंटेड लिथोग्राफ एंड फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ इन्होंने अंदर इलस्ट्रेशन में डाला है, दैट इज डॉक्यूमेंट डजंट मीन ओनली कि किसी भी तरीके का फोटोग्राफ, सीसीटीवी भी एवरीथिंग विल कम अंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली कोई भी लाइंस है फिगर्स है वो एक चीज़ फॉर्म कर रही है, वो आपने रिकॉर्ड करना, क्या करना, आप अगर मैप बना रहे हो या आप कोई चीज़ नक्शा बना रहे हो, घर का नक्शा बना रहे हो, होता है ना, जब सिटी केसेस में आप कभी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होता है, आपको साइट प्लान देना पड़ता है, वो साइट प्लान क्या होता है, दैट साइट प्लान इज नक्शा, अब आपने वो बनाया है क्या बनवाया स्पेशली, दैट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने वो पूछते हैं आपने डॉक्यूमेंट बनाया, साइट प्लान बनाया, तो साइट प्लान क्या है, मैप है, दैट बिकम्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, सो एनीथिंग व्हिच वी आर रिकॉर्डिंग, जिसमें हम किसी का नक्शा बना रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम चाहते हैं कि मैटर लिखा है ना, वर्ड एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अदरवाइज, कोई भी इवेंट, कोई भी फैक्ट, कोई भी आइडिया आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट बिकम्स मैटर एंड दैट मैटर बिकम्स डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट इट मींस, समझ आ रहा है। देन इट सेज इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोरेज डॉक्यूमेंट, नॉर्मल है, किसी मेटल प्लेट और उस पे कर लो, जो फोर्थ है सॉरी सिक्स्थ है उसमें आ जाओ, वो इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशन, इवेंट्स, वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट, आपने कुछ क्लिक करी, जैसे क्या करना वाला शो के लिए वीडियो रिकॉर्ड अब दिखाने के लिए फ्रेंड्स को कि हाँ भाई और फटी है ये मस्त, ठीक है, महीने चल रहा है, अच्छा शो है, हो गया सामने रिकॉर्ड लड़ाई, ठीक है, लड़ाई होगी सामने, अब लड़ाई जो रिकॉर्ड हुई दैट हैज बिकम इंपॉर्टेंट एविडेंस, ओके, दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो आपने डिजिटली रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट, सो इट सेज दैट आपकी कोई भी इसमें उसको क्लिक करें इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट वाले को, देखो somebody is asking क्या बता दो कि व्हाट्स द प्रूफ फॉर एआईडी, मैंने तो दिया नहीं था, मेरे टाइम में होता नहीं था, अब मुझे इतना पता है कि ओपन बुक टेस्ट होता है, और अगर आपको बेसिक नॉलेज तो एआईडी निकाल दोगे, तो राउस बच्चों को टेंशन नहीं चाहिए, तो खेलते खेलते निकल जाएगा, फोटो पड़ेगी, ठीक है, इतना मुझे पता चला है कि यहाँ से बच्चे क्यों निकाल लेते हैं एआईडी, अब मैंने कभी दिया नहीं, जब मेरे टाइम में होता नहीं था, नहीं दी, तब सत्यवादी थे लोग, चलो सिक्स डेट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ मेल्स, सर्वर लॉग्स, तो इसको वो करेंगे कोई भी, दैट मींस इलस्ट्रेशन 6 कवर्स एवरी डिजिटल, जो भी डिजिटल स्टफ हो सकता है, उन्होंने सब डालने की कोशिश करती है, आपकी लोकेशन, अब क्या होता है सपोज किसी ने कहीं पिक्चर क्लिक करी और उस पिक्चर में वो कर तो रहा था कि बहुत ब्यूटीफुल सीन है ना, एस्थेटिक्स दिख रहे हैं ना, पिक्चर क्लिक करते हैं और क्या हो गया, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत सारी आसमान की पिक्चर क्लिक करते हैं, तो अच्छा लग रहा है, सामने पता चला कि एक्सीडेंट में कैप्चर हो गया, तो मेरी जो पिक्चर है आज की टेक्नोलॉजी में वो जगह भी बता देगी और वो टाइम स्टैम्प भी होगा, तो वो क्या डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ऑफ एन इवेंट, एक इंसिडेंट हुआ उसका, और उससे मेरे को क्या पता चल रहा है, नॉट ओनली कि ये पर्टिकुलर एक भाई आपस में एक्सीडेंट हो गया, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो कहाँ हुआ, किस टाइम पे हुआ, सो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, दैट बिकम्स कंप्लीट, तो ये क्यों इसको इतना इलैबोरेट करेंगे आप ईमेल पे, आपकी लोकेशन, एवरीथिंग आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हो, एनीथिंग व्हिच यू आर यूजिंग फॉर डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली, वो सब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है, जैसे आपने इसको टेक्स्ट कर दिया कि मीट मी एट 5 o'clock हियर, दैट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप कोई बारकोड आप स्कैन करते हो उसका पेमेंट करते हो, दैट बिकम्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, बारकोड किया, आप किसी को लोकेशन शेयर कर रहे हो, आप कोई इमेज पोस्ट कर रहे हो और व्हाट्सएप किसी को शेयर कर रहे हो, ये सब चीजें जो है ये वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिजिटली में इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस, एक्जैक्टली डिजिटली मतलब मैकेनिकली बन रही है, इंसान ये बना रहा है, मशीन बना रही है, और कंप्यूटर इज अ मशीन, द वे द मोर इट इज बीइंग प्रोसेसिंग एवरीथिंग, भेजना स्टोर करना वो सब इलेक्ट्रॉनिक है अब, ठीक है, देयरफॉर इट इज सेड कि कोई भी डिजिटली एंड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, सो दिस इज ऑल दिस इज डॉक्यूमेंट अंडर डीएसए, हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या है, तो उसको आगे पेपर कराने के लिए 61 62 63 में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, सो इतना हो गया क्लियर, अभी किसी को डाउट है इसमें, मैं एग्जांपल आपके सारे छोटे लिखवा दूं कि क्या होता है, तो थोड़ी सी डिटेल्स लिखें, ठीक है, somebody saying you are mean कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में उस टाइम सामने आने लग जाता है कि हाँ ये कोई एग्जाम्पल हो सकता है, अगर होता है ऐसे कि मैं लिख के सोच के कुछ और आती हूँ, या आप लोग की एनर्जी ऐसी कि मेरे अंदर का युवा जाग जाता है, तो मुझे वो वाले एग्जाम्पल एकदम से दिमाग में आने लगते हैं, ठीक है, प्लीज राइट डाउन,
evidence. Introduction A. Okay, introduction of electronic evidence. I want to start with introduction. Electronic evidence. Electronic evidence is any information or data. Is any information or data. Is any information or data stored or sent. Stored or sent. Stored or sent in a digital or electronic form. In a digital or electronic form. In a digital or electronic form that can be used. That can be used. That can be used to prove or disprove something. To prove or disprove something. To prove or disprove something in a code. In a code. It is like a proof. It is like a proof. But not on papers. But not on papers. And rather it is on computer. It is on computers, phones, computer, phones, and internet, etc. And internet, etc. Okay. Section 1 of the Act. Section 1 of the Act. Section 1 of the Act, PSA की बात कर रहा हूँ, does not include the word India. Does not include the word India, which was earlier in Evidence Act. Which was earlier in Evidence Act. This commission is aimed. This commission is aimed. This commission is aimed to broaden the Act's applicability. Broaden the Act's applicability. To broaden the Act's applicability. As it will help in procurement. As it will help in procurement. As it will help in procurement of electronic or digital evidence. Of electronic or digital evidence. Of electronic or digital evidence originated from outside India. Originated from outside India. Originated from outside India. In cross-border cases. In cross-border cases. In cross-border cases where electronic evidences. Where electronic evidences like server and digital record, etc. Like where electronic outside India. In cross-border cases. Cross-border cases. In cross-border cases where electronic evidences. Where electronic evidences.
like server and digital record, etc. Like server and digital record, etc. Like server and digital record, etc. Are from outside India. Are from outside India. Are from outside India. It will make easier for Indian courts. It will make easier for Indian courts. It will make easier for Indian courts and investigating agencies and investigating agencies and investigative agencies to handle global digital data, to handle global digital data, to handle global digital data without strict territorial limitations. Without strict territorial limitations. Without strict territorial limitations. As opposed to Indian Evidence Acts. As opposed to Indian Evidence Acts. As opposed to Indian Evidence Acts. More geographical restriction. More geographical restriction. More geographical restriction. Full stop. DSA allows smoother functioning. DSA allows smooth. Functioning. Okay. Subsection 2, subsection 1, subsection D. Document. DSA allows smoother functioning. DSA allows smoother functioning. Okay. Subsection 2, subsection 1, subsection D. Document. कितने पेजेस लीव करने हैं अब तक कितने लीव करने हैं कितने पेज हुए एक ही हो गए 2 पेज ठीक है 2-1D defines the term 2-1D defines the term document. Section 2-1D defines the term document. The purpose of the section is to treat. The purpose of the section is to treat. The purpose of this section is to treat any form of recorded information. Any form of recorded information. Any form of recorded information. Physical or digital. Physical or digital. Physical or digital as a potential evidence. As a potential evidence. As a potential evidence. As long as it is written. As long as it is relevant, authentic, authentic. And meets admissibility rules. And meets admissibility rules. And meets admissibility rules. The word matter refers to any information fact, refers to any information fact, refers to any information fact, idea, event, or content.
idea, event, or content. Idea, event, or content that needs to be preserved. That needs to be preserved. That needs to be preserved. It can be words. It can be words, numbers, images, sound, or data. It can be words, numbers, images, sounds, data, etc. The key is that matter is meant to be numbers, images, sound, or data. It can be words, numbers, images, sounds, data, etc. The key is that matter is meant to be recorded. The key is that matter is meant to be recorded. That means the information must be, information must be put down in some form, that is written, drawn, DRAWN, typed, photographed, typed. Photographed, typed, photographed, or stored digitally. It has to be fixed or captured. It has to be fixed or captured upon any substance. Upon any substance. Upon any substance. Substance. Upon any substance. Or stored digitally. It has to be fixed or captured. It has to be fixed or captured upon any substance. Upon any substance. Upon any substance. Substance can be anything physical. Substance can be anything physical. Substance can be anything physical or digital. That holds the information. That holds the information. That holds the information. Full stop. The recording must be done. The recording must be done to preserve or refer to the information later. It does not have to be created. The recording must be done to preserve or refer to the information later. To preserve or refer to the information later.
information later. It does not have to be created. It does not have to be created. It does not have to be created specifically as evidence. Specifically as evidence. Even if it is accidentally recorded. Even if it is accidentally recorded or for some personal use. Or for some personal use. It will be covered under the definition. It will be covered under the definition. इसका illustration 6 का लिख लो. बाकी मैंने बता दिया तो major illustration 6 का लिखिए meditation. This illustration covers. This illustration covers. This illustration covers every type of digital. Working or stuff, where matter is recorded. That is illustration 6. Every kind of material or stuff. ये बना every kind of material. कोई भी digital material है, कोई भी digital stuff, मतलब कुछ भी सोच सकते हो, वो सब कवर करने की कोशिश की गई है. शुरू से मतलब illustration 6 से कर देते हैं. शुरू से क्या मतलब? An electronic record. Illustration 6 ना. This illustration covers all digital material or stuff. कितना की बात है इसके आगे मैंने कर दी. Matter recorded, any matter recorded electronically. Any matter recorded electronically on digital substances. On digital substances for recording communications or data. For recording communications or data. For recording communications or data are called documents. हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड अभी क्योंकि वही चल रहा है ऑफ 2D में. 2D में मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा. आप लिखते रहोगे तो छोके आप मन करे तो पैराजीट लिख सकते हो. इतने तो छोटे बच्चे नहीं है वकील हो चुके सारे इतना तो नहीं. ठीक है कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल an email chain discussing a business deal is a document proving agreements. Sir. Logs showing website visits. Server logs showing website visits. Server logs showing website visits, WhatsApp messages or voicemails.
WhatsApp messages or voicemails. WhatsApp messages or voicemails. Websites or GPS data. Websites or GPS data. Websites or GPS data on smartphones. On smartphones are documents. Or documents. Social media post, images on website or app. Social media post, images on website or app. Social media post, images or websites on app are all fall under the category of this definition. All fall under the category of this definition. All fall under the category of this definition. Full stop. The definition is intentionally wide. Definition is intentionally wide. The definition is intentionally wide to adapt to new technologies. To adapt to new technologies. To adapt to new technologies that fit under the given scenario. That fit under given scenario. That fits under the given scenario. Full stop. ठीक है, एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर सेक्शन 1E करेंगे. That fit under the given scenario. That fits under the given scenario. Full stop. ठीक है, एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर सेक्शन 1E करेंगे. Okay, somebody is asking, relax, please. Somebody is asking, जैसे हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, अगर लोकेशन शेयरिंग डिजिटली इज डॉक्यूमेंट, पर उसमें हम खुद से तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ तब भी, क्योंकि वो डिजिटली हमारे फोन में हो रहा है. और मैंने आपको क्या स्पेशली लिखवाया कि जरूरी नहीं है आपको एविडेंस के लिए कुछ रिकॉर्ड करना है. आप जो नेचुरली रिकॉर्ड कर रहे हो, एक्सीडेंटली भी कर रहे हो. मैंने बताया ना कि आप अगर कर्म करा पिक्चर क्लिक करके वो डाल पिक्चर क्लिक, दैट इज एविडेंस. वही वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा. तो वही कह रहे हैं, इसी का मतलब है कि जरूरी नहीं आप उसको करो. इन नॉर्मल कोर्स में जो भी रिकॉर्ड होता जा रहा है, अब फॉर एग्जांपल हमें ट्रेस करना है कि कोई बच्चा किडनैप है, ठीक है, हमें ट्रेस करना है कि कहाँ पे. तो ऑब्वियसली अगर उसके पास कोई फोन है या अच्छा चल किसी उसका फोटो ट्रैक करें, वो जानते तो नहीं बताएगा, और आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन इंसान कहाँ गया था. सो व्हाट इज दैट बिकम्स योर, एज पर दिस डेफिनेशन, दैट बिकम्स योर डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट क्या होता है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, वो हम 2E में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लास स्टार्ट्स एट 12:50. समझ सकते हैं, यू हैव एनी आइडिया व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट टीचर्स मोटिवेशन. अभी पुराने वालों की जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी भी, बताइए जल्दी. Recording once will return to disturb or refer to the information later. If it's not happy, use this details. ये तो बताया मैंने मोहम्मद उस्मान कि नॉर्मल आप कुछ भी प्रिजर्व कर रहे हो, आपकी लोकेशन प्रिजर्व हो रही है, कोई डेटा ही तो बनता जा रहा है, तो डेटा क्या है, डॉक्यूमेंट हो जाता है, फ्यूचर में जरूरत पड़ी. मैं ये बताता तो उसको यार मैंने क्लिक कर दे कि मैंने इसने माता की मदद किया, मैं कर भी सकती है, सब कर दे. तो मैं किस तरीके से प्रूव कर सकती हूँ, चलो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं बन गया, मेरी लोकेशन से भी तो आप देख सकते हो. दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज प्रिजर्व्ड डिजिटली इन माय फोन, इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट ओनली, एंड आई कैन यूज इट एज एन एलिमेंट. वो भी मेरे यहाँ थी, समझ में आ रहा है. मेरे किसी को डरा नहीं रहता, मैं कहाँ से समझ लूँगी, कैसी मजाक को पुलिस की मत देना. चलो सेक्शन 2E, एविडेंस. अब एविडेंस आप ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर ही चुके हो. एविडेंस क्या होता है, जो भी चीज़ हमें मैंने बताया प्रूव करनी है, बस प्रूव करनी है. दो तरीके से, इसमें दो चीज़ लिखी है, एविडेंस ओरली एंड डॉक्यूमेंट. ओके, पहले लिखा है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements including statements given electronically which the court permits or required to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. तो oral evidence क्या होता है, कुछ भी हम बोल रहे हैं, वो बोलते हैं स्टेटमेंट. तो इसमें इसका
इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. व्हाट डज दिस मीन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एग्जैक्टली. अगर आप अभी पेंडेमिक बहुत मेजर हुआ था, एविडेंसेस भी जूम पे हो रहे हैं और एवरीथिंग इज हैपनिंग डिजिटली. ठीक है, बीसीसी पे चल रहा है पूरा ट्रायल. और ठीक है, कई लोग भी बहुत सारे केसेस बीसी पे देते हैं कि हाँ ये वाला केस कि साथ एक कौन जाएगा, आज केसेस ब्राउजर में किसी गाड़ी तो साथ एक बीसी ले ली. ऐसे होता है. अब उसमें आपको ओरल एविडेंस देना है. ओरल एविडेंस क्या होता है? आपने पढ़ा क्या होता है ओरल एविडेंस? जब आप कोई चीज ओरल स्टेटमेंट दे रहे हो कि ये मैंने देखा कि वो उसको सब कुछ छीन के भाग गया. ओरल मैंने देखा वो साइन कर रहा था मेरे सामने, ही वाज साइनिंग दैट बिल. ओरल स्टेटमेंट दे रहे हो ऑफ अ फैक्ट, proving that this bill is authentic, proving that that person has snatched other person's bag. बट व्हाट जब आपको यही ओरल स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट अलाउ करेगा, कोर्ट की परमिशन बिना तो दे सकते हैं, कोर्ट अलाउ करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक देने का आप वो चीज़ बीसी पे दे दो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे. अब जैसे कोई विल का केस हो, विल प्रोटेक्ट करनी और 5 भाई 4 भाई 2 भाई अमेरिका रहते हैं, 1 भाई कनाडा रहते हैं, सब नहीं आ सकते. तो बीसी से वो जो ओरल स्टेटमेंट देना चाहेंगे वो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इट हैज बीन ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, बट इट इज अ ओरल स्टेटमेंट. बिकॉज़ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट रिकॉर्डिंग करके शो नहीं कर रहे. वो रिकॉर्डिंग करके शो कर रहे हो तो क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट. आपको जब डॉक्यूमेंट आपने बताया डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड करते हो, विजिबल करते हो, मैटर किसी सब्सटेंस में दैट बिकम्स डॉक्यूमेंट. बट अगर जैसे कोई बात आई है, कोई वाला केस चल रहा है, वो बोल रहा है मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है कि नहीं मेरा हिस्सा था, इसने मां को इसका आर्टिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ भी वो बोल रहा है. ठीक. तो व्हाटएवर इफ ही इज लाइव सेइंग टू द कोर्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक मींस इज ओरल. दैट इज व्हाट नाउ बीएसए हैज इंक्लूडेड. पहले ये नहीं था. ठीक है, पहले सिंपल था कि ओरल मतलब जॉब बोलो, रिटन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है. अब इन्होंने इसमें डाल दी क्योंकि अगेन पूरा पर्पस क्या है इसको चेंज करने का, जो अब डिजिटलाइजेशन हो गया हर चीज़ में, उसमें आपको एविडेंस प्रूव करने में दिक्कत ना हो. ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है और डेली बेसिस हो रही है, आपको ये तो है नहीं जो भी डिजिटलाइजेशन सब हमेशा नेगेटिव ऑफेंसेस के लिए ही हो रहा है, लाइफ को ईजी करने के लिए हो रहा है. कितना अदरवाइज तो बहुत ईजी होता है, सोचते हो कि मैं मेरे को नहीं ये जूते खरीदना है, आपने बस बोल के सोचना है, आपका फोन आपको दिखा देगा. आप मन में सोच रहे हो, आपको इतना एडवांस नहीं हो कि मन की बात चल रही है, और अपने अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे मैं सोच रही हूँ मेरा नाइकी के शूज है, तो नाइकी दिखाने लग जाएगा. लाइफ तो ईजी हो गई है ना इससे. तो ये जो डिजिटली जो ये चीज़ जो भी दिस एवोल्यूशन व्हिच हैज कम व्हाटएवर डायनामिकली इट इज इवॉल्विंग इज बेसिकली टू मेक आवर लाइफ ईजी. तब भी उन्होंने डॉक्यूमेंट डेफिनेशन में लगा कोई भी नेचुरली आप प्रिजर्व करते रहो कोई चीज़, कोई भी मैटर रिकॉर्ड हो रहा है इन एनी सब्सटेंस, वी विल ट्रीट इट एज डॉक्यूमेंट. पर्पस क्या है कि हमको क्या पता कब कोई एविडेंस मतलब कभी कोई ऑफेंस के लिए किसी चीज़ के लिए एविडेंस की तरह यूज करना पड़ता है, तो हम सिंपल को चलते रहने दो, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है. अब इन्होंने क्या किया कि ओरल में और डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डाल दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है. अब कोविड में जैसे इट वाज वेरी हेल्पफुल कि कोर्स फंक्शन करते रहे, काम होते रहे, पर कोविड फैले पे ना तो इसी पे आप सब काम कर दो. तो उन्होंने इसमें इनको प्रोटेक्ट मेड इट मोर ईजी. आप कभी भी आपको ये डिमांड बहुत बीमार है नहीं आ सकती, उनका पीसी से आप एविडेंस ले सकते हो. दैट इज ओरल स्टेटमेंट जो करेंगी वो आप इसे ले दैट इज परमिसिबल. बट उसमें क्या लिखा हुआ है? कोर्ट परमिट्स. कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है. Then they're saying that because it is written means and includes, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव है सब इलेक्ट्रॉनिक और अदरवाइज फिजिकल स्टफ को मिला के इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, जो कि आजकल चलता है व्हिच फिट्स टुडेज वर्ल्ड. तभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप दे रहे हो स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉनिक ओरल एविडेंस. ठीक है, ओरल एविडेंस का तो पता है ना सबको. और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट एविडेंस का जो हम डॉक्यूमेंट जो हमारे हाथ में है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, अब ये लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स. ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फिजिकल, ये बुक होगी, कॉपी होगी, कोई फाइल होगी, वो तो है ही है. इंक्लूडिंग प्लस इंक्लूसिव है ना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. आप कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए उसे प्रोड्यूस कर रहे हो एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. अब क्या होता है कोर्ट में एविडेंस देना और एग्जीक्यूट करना वो अलग चीज़ होती है. ठीक है, आप कोर्ट में एविडेंस कोई जब आप देते हो तो आप अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप देते हो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, डॉक्यूमेंट्स को क्योंकि प्राइमरी एविडेंस माना जाता है कि हाँ भाई ये तो सच्ची है, इसमें चांसेस कम है क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को भी सेल प्रूव करनी है कि एक मेरा है, तो अगर वो एसडीएम से स्टैम्प होगी, एसडीएम का उसमें लगा होगा सर्टिफिकेशन होगा, तो हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे कि हाँ भाई इसने स्टैम्प ड्यूटी पे करी थी, बकायदा ट्रांसफर भी है प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्सन टू दिस पर्सन. तो ये सब प्रोड्यूस करते हो. जब प्रोड्यूस करते हो तो उस टाइम पे कोर्ट उसकी इंस्पेक्शन लेना नहीं करती है. हम जब उसको एग्जिबिट के लिए देते हैं तब कोर्ट देखती है कि हाँ भाई इसको करना है, उसको मार्क करती है कोर्ट की हाँ भाई इसको हमने यूज़ करना भी है कि इसको हम स्किप करेंगे, दिस इज नॉट एडमिसिबल. आप तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दोगे. ठीक है, मतलब मेरी कोई फ्रेंड की बात हो रही है और मैं उस बात को भी रिकॉर्ड व्हाट्सएप में लगा दूँ और मैं क्या बताना चाहती हूँ उससे कि देखो मैंने उसको बताया था कि मैं खरीद रही हूँ. अब दिस इज नॉट एट ऑल एज रेलेवेंट, मे बी एडमिसिबल बट नॉट रेलेवेंट थिंग. सो आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लगाओगे तो वो कोर्ट इंस्पेक्शन करेगी एंड देन इफ इट इज एडमिसिबल तो उसको यूज कर लिया जाएगा एज डॉक्यूमेंट एविडेंस. सो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था. एग्जिबिट का कैसे होता है? जब आप एग्जामिनेशन अचीव करते हो, मुझे प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जब आप एग्जामिनेशन अचीव करते हो और वो कब करते हो? पहले आपका सिविल केस की बात करते हैं. पहले आपका ना एडमिशन डिनाइल होगा, फिर इशू फ्री होंगे, इशू फ्री होंगे तो कॉस्ट लगेगा. सबसे पहले कॉस्ट एविडेंस लगेगा, प्रिवेंटिव एविडेंस लगेगा. तो आपको क्या करना रहेगा? आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा. तो वो आप देते हो इन केसेस थ्रू एफिडेविट. आप एफिडेविट में लिख के देते हो, साथ ही साथ एफिडेविट में मार्क करते हो कि ये वाला मेरा डॉक्यूमेंट एग्जिबिट डब्ल्यू इनटू विटनेस 1 ओवर ए तो ये मेरा एफिडेविट. फिर दूसरा हम लिखते हैं ये डॉक्यूमेंट मेरा सेल है, सो डॉक्यूमेंट दिस इज मेरी सेल हुई थी, दिस इज बीन एग्जिबिटेड ई एक्स लिखते हैं पीडब्ल्यू 1 ओवर. और फिर हम कोर्ट की फाइल जो डॉक्यूमेंट लगे हैं रेड पेन से मार्क करते हैं एग्जिबिट पीडब्ल्यू 1 ओवर 2. स्पेस छोड़ते हैं जगह और फिर कोर्ट को कोर्ट का नाम लिखते हैं, जज का नाम, कौन सी कोर्ट स्पेस छोड़ते हैं साइन. और जब देखिए हमने जब डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करके बताते हैं, एग्जिबिट मतलब हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख लो, ये मैं यूज करना चाहती हूँ टू प्रूव माय पॉइंट. पर कोर्ट देखेगी ना कि कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा एडमिसिबल है, तो जो होगा उस पर कोर्ट साइन करेगी, बाकी वो छोड़ देती है.
क्या कोर्ट अपने आप से भी मान सकती है डॉक्यूमेंट लॉ किस सेक्शन में पुराने वाले 136 131 हाँ कुछ को भी मतलब ये मुझे याद नहीं है कौन सा सेक्शन है बट उसमें कोर्ट अगेन क्या है इसके अलावा जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट खुद से भी मान सकती है कि कहाँ को डॉक्यूमेंट लेकर आओ मुझे देखना है टू गेट क्लैरिटी ठीक है कोर्ट अगेन अपने आप से भी मान सकती है कि हाँ कैसे होगा सो दिस इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो इसको पढ़ते द्वारा ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट जो उसकी इंस्पेक्शन करना चाहेगी अब हम कोर्ट खुद से मांगेंगे या हम दे रहे हैं कि दीज आर द डॉक्यूमेंट आई एम प्रोड्यूसिंग टू प्रूव माय पॉइंट एविडेंस हम क्या करना चाहते हैं हम अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं टू प्रूव माय पॉइंट तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से हाँ कोई भी ऐसी ईमेल है कोई ईमेल जिसमें मैं प्रूव कर रही हूँ इसने एक्नॉलेज कर लिया था कि ट्रीटमेंट इसको देनी है और लिमिटेशन के अंदर ही है ठीक है तो हमारे इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट एविडेंस मैंने ऐसा रिकॉर्ड निकाला जिसमें मैं अपना ये वाला पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ दिस पर्सन हैड टू रिटर्न माय मनी एंड दिस पर्सन आल्सो इन द लिमिटेशन पीरियड हैड आल्सो एक्नॉलेज तो सेक्शन 18 लिमिटेशन है अंडर लिमिटेशन पीरियड उसने कर दिया तो मेरा टाइम बढ़ गया और उसने एक्नॉलेज कर दिया मैं कोर्ट को दिखाती हूँ कि मेरा लिमिटेशन है इसने इस दिन को एक्नॉलेज कर दिया था और अब मैं ये प्रूव कर रही हूँ कि ये एक्नॉलेजमेंट इससे मान रहा है कि इसने मुझे पैसे देने हैं तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बट जब हम एडमिसिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं ना अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी उसमें हमको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तब कोर्ट को लगता है कि इसको एडमिट करना है कि नहीं करना कि ऑथेंटिक है कि नहीं है जो हम बात करते हैं जो सेक्शन 63 में पहले 65 डी होता था एविडेंस एक्ट में और वो इसलिए होता था कि हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कुछ टेम्परिंग छेड़खानी नहीं है ठीक है सो फर्स्ट थिंग एनी डॉक्यूमेंट जो भी क्या लिख रहे हो मैटर रिकॉर्ड वगैरह सब स्टैंडर्ड्स जो हमने पढ़ा 2D में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब बनता है जब आप उसको प्रोड्यूस करते हो टू प्रूव योर पॉइंट कोई भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए प्रूव करने के लिए कैसे करोगे एक इंसान कह रहा है कि मैं मालिक हूँ उस घर का आपके पास एविडेंस है तो आप उसका पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट प्रूव करोगे राइट आप उसको लगाओगे तो कोर्ट क्या इंस्पेक्टिंग तो करेगी कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है उसके बेस पे कोर्ट में एक इट्स ओन जजमेंट कि देना नहीं देना डिपेंडिंग ऑन द कॉज एग्जामिनेशन सो इट मींस दैट कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट व्हिच इज आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली यू आर यूजिंग टू प्रूव योर पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक और दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक है इतना क्लियर है इसके लिए पेश कर लें और डाउट है इसमें एग्जिबिट पीडब्ल्यू मींस पीडब्ल्यू मतलब प्रिएम्प्टिव विटनेस अब मेरे को अपना डॉक्यूमेंट मान लो मेरा कोई केस चल रहा है जिसमें मुझे प्रूव करना है कि घर मेरा ठीक है ये घर मेरा तो पहला तो विटनेस मैं खुद ही होंगी ना मैंने केस फाइल किया था तो प्रिएम्प्टिव में और प्रिएम्प्टिव का पहला विटनेस खुद मैं तो मैं होती पीडब्ल्यू 1 प्रिएम्प्टिव विटनेस नंबर 1 अब मुझे अपने भाई को प्रोड्यूस करना है कि हाँ वो भी बताएगा कि हाँ ये घर इसके नाम पे तो क्या हो जाएगा प्रिएम्प्टिव विटनेस 2 तो हर प्रिएम्प्टिव का क्या जाता है अलग अलग एफिडेविट जाएगा इन प्रोसेस एग्जामिनेशन ठीक है एग्जामिनेशन हर एक अपना अपना एफिडेविट जब जाएगा उसके बेसिस पे हम एग्जिबिट मार्क करेंगे इन कोर्ट की फाइल एग्जिबिट मतलब हम जाते हैं कोर्ट को ये देखो हमने ये एग्जिबिशन एग्जिबिट दिखा दिया देखो कि ये डॉक्यूमेंट अब कोर्ट को अगर उसको लेना होगा तो कोर्ट उसको मार्क कर देगी अगर कुछ हो गया दैट मींस कोर्ट को थिंक इट इज एडमिसिबल इट इज रेलेवेंट इट इज मार्क इट इज कंसीडर्ड एज रिलेटेड तो आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ये डेफिनेशन क्या है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली या अदरवाइज आप अगर उसको प्रोड्यूस करते हो कोर्ट में अपना कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए तभी तो कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करेगी फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट्स इट ठीक है अब इसकी एडमिसिबिलिटी कैसे होती है इसके अंदर तीन चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी तीन चीज होती है रिलायबिलिटी एडमिसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है ठीक है कितना प्रोबेबल है कि इसको ये पता होगा इसने देखा होगा एविडेंस का जो भी है बीच में इसके बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आएगी तो इसको प्रूफ करने के लिए एक अलग प्रोसीजर है जो कि है आप सर्टिफिकेट देते हो तो वो हम सेक्टिंग से कल समझेंगे कल 61 62 63 पे आएंगे उससे पहले 57 का थोड़ा सा समझेंगे एंड देन वी गो टू 61 63 एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो ठीक है पर इसको प्रूफ करने के लिए प्रोसीजर है प्रूफ कैसे करोगे इसको एडमिसिबल बनाने के लिए कि ये रेलेवेंट तो है बट ये एडमिसिबल भी है क्योंकि हमने इसने छेड़खानी यही करी है और हमने कि एज पर केस जो प्रूफ मेंशन है हमने इसको कंप्लायंस करके इस सर्टिफिकेट साथ में लगा के दे दिया टू प्रूव दैट कि मैंने ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रही हूं अब देखो डिजिटली क्यों छेड़खानी के ज्यादा चांस होता है मेरे फोन में मैसेज है किसी का मैं मैसेज करके चेंज कर दूं कुछ और कर दूं मैं उसको शेयर करना नहीं करता मैं इतनी टेक्निकली हाई फाई बोलूं कि मैं उससे हो सकता है टेक्निकल हैकर होता है जो हायर कर चल के काम करते हैं उसका हैकर कुछ ठीक कर दे कुछ भी करने को तो आपको बताना पड़ता है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ तो कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं लॉ ने कि आपको उसको फॉलो करके ये बताना होता है कि व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई प्रोड्यूसिंग व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंदर कि हम कोर्ट की इंस्पेक्शन ले रहे हैं इट कैन बी एडमिसिबल तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज अनदर थिंग व्हिच नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर टू फॉलो व्हिच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 63 का 4 क्लॉज 4 व्हिच इज अ सर्टिफिकेट और वो मैं आपको बताऊंगी सर्टिफिकेट कैसा होता है कुछ लोग दिखा दूंगी तो वो शेड्यूल में मेंशन होता है विल फॉलो दैट तो इससे आपको पूरी एक्सप्लेन हो जाएगा जो असल में आपको दिखाना वाला सर्टिफिकेट कई बार मुझसे देख लो कल मुझे समझ में कैसा होता है सर्टिफिकेट क्या लिखा होता है कितनी बार मैंने बोला कैसा लिखा होता है ये लिख के वही करते हैं सो दिस इज द थर्ड थिंग तीन चीजें हमने पढ़ी अभी शुरू में दिस इज फोर्थ थिंग व्हिच इज स्पेसिफिकली द प्रोसीजर वी फॉलो फॉर एडमिशन कि आप इसको एडमिसिबल बनाता हो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ज्यादा प्रोसीजर जो हमें पढ़ना पड़ेगा इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक अलग सिनेरियो है जो समझना पड़ता है ठीक है चलो देखो इसकी डिक्टेशन सेक्शन 21E अगर ये फाड़ के फेंको अब मुझसे पूछ रही है किसकी पेरेंट है जिसका मैं नाम ले लेती कोई लेना पसंद करता पर्टिकुलर कुछ चीज़ मैंने फाड़ के मुझसे पूछा मैं तो इंकरेज नहीं करूँगी ना उसको मैं तो भी होगी चला लो ठीक है मैं नाम नहीं ले सकती मैं ले लेती नाम सेक्शन 21E एक्सप्लेन्स सेक्शन 21E एक्सप्लेन्स what counts as evidence
What counts as evidence? What counts as evidence? It means evidence is anything. It means evidence is anything. It means evidence is anything that helps prove or disprove. That helps prove or disprove. That helps prove or disprove facts in a case. Facts in a case. It is divided into two main categories. It is divided into two main categories. It is divided into two main categories: oral evidence and documentary evidence. Oral evidence and documentary evidence. Oral evidence and documentary evidence. Also, oral evidence means what people say. Oral evidence means what people say. And documentary evidence means documentary evidence means documents that are preserved or made or recorded. That are preserved or made or recorded. As per section 2D. As per section 2D. This definition is inclusive. This definition is inclusive. This definition is inclusive, especially for electronic and digital evidences. Especially for electronic and digital evidences. Especially for electronic or digital evidences, according to the changing society. According to the changing society. This clause 1 की बात करें, clause 1 लिख लो, जहाँ पे oral evidence है. This clause ensures fairness. This clause ensures fairness. As evidence that relates to matters of fact under inquiry. Matters of fact under inquiry can be proved orally. Can be proved orally, both physically and in electronic form. Both physically and in electronic form. Both physically and electronic form. This explicitly covers electronic form. So that the statements through
videos, statements through videos, statements through videos of the witnesses. This explicitly covers electronic form, so that the statements through videos, statements through videos, statements through videos of the witnesses can be allowed for the fair procedure, for the fair procedure, for the fair procedure. The only thing to be kept in mind is, it is done with the permission of the court. It is done. The permission of the court. It is done with the permission of the court. And like any other oral evidence, which witnesses come and give physically in the court, which witnesses come and give physically in the court, which witnesses come and give physically in the court, under the oath, same thing can be done. Same thing can be done with the witnesses appearing before the court. With the witnesses appearing before the court through electronic means. Full stop. Clause 2 talks about documentary evidence. Clause 2 talks about documentary evidence, which includes any document or digital record. It is the tangible proof. Tangible proof. And such document must be produced for the inspection of the court. For example, showing an email. Sharing a screenshot. Producing a video.
all comes under documentary evidence. All comes under documentary evidence. फुल स्टॉप. तो डॉक्यूमेंट जो 2D में लिखा है वो सब जब आप प्रोड्यूस करते हो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है. ठीक है. तो इन दोनों का मिलके ये दोनों का मिलके आप प्रॉपर यू रीच टू द कंक्लूजन. ठीक है. नाउ ओपन सेक्शन 61. क्योंकि अभी आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक अलग चीज है. क्योंकि उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए प्रोसीजर व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज. आपके ऊपर ओनर्स है कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री चाहे बोले किसी भी प्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो ना वो एडमिसिबल माना जाए. ठीक है. अब सेक्शन 61 क्या कहता है? नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन द एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एंड सच रिकॉर्ड शैल सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 हैव द सेम लीगल इफेक्ट वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी एज अदर डॉक्यूमेंट्स. सो वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सेम फॉर थिंग है जैसे नॉर्मल पेपर रिकॉर्ड होगा. मतलब अगर सीएलडी को प्रोड्यूस कर रहा है फिजिकली. ठीक है. और अब जैसे मान लो कोई चालान है या कोई चालान छोड़ो कोई आपका आरसी है आप आरसी फिजिकली देते हो वो उसकी उतनी ही वैलिडिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की